So this one is part of reversible reactions. It has something to do with reversible reactions. What are your reversible reactions? The reactions that can happen in both directions. Okay, so these are reactions that can happen. Yesterday we tha moles hi tha. We're going to start with the chemical equilibrium now. So reactions that can happen in both forward and backward reactions. Assalamu alaikum, sir. Islam. And backward direction. What that means is that if you have a reactant, it can change into a product, and the reverse could also happen. The product could change back into a reactant. So the reaction could go back and forth. It can happen in both directions. You have many reversible reactions. One example of a reversible reaction is, okay, if you have a water bottle and that's closed, then there might be some water in it, and that water would be in liquid state, and this water would be constantly evaporating. But you never see, if it's a closed container, you never see it evaporating. TK, it will form water vapors. So it will form all these tiny water vapors, lots of them. But the reverse reaction would also be happening, that these water vapors, which are H2O gas molecules, वो वापस condense कर रहे होंगे. They'll be condensing back. So which is why in a closed container, you never see water evaporating, because if 100 molecules evaporate at the same time, 100 molecules condense back again, so the net result is that the amount of water vapor remains constant. TK doesn't increase. So that's a kind of a reversible reaction, like liquid water is constantly evaporating in a closed container, turning into gas. But at the same time, those water vapors are condensing back again because they don't have anywhere else to go. It's a closed container, so particles, they'll bump into the walls of the container and they'll eventually lose energy and they will fall back. So if they gain energy, they evaporate. If they lose energy, they fall back into liquid state. So the reaction would be going both in forward and backward direction. So is this clear example what a reversible reaction is? Yes or no? Is this clear? Yes, sir. अच्छा, अब ये है कि what is an equilibrium? साथ ही ना, whenever you talk about reversible reactions, you talk about a thing that's known as dynamic equilibrium. So you must know what the definition is. So a dynamic equilibrium is achieved when the rate of forward reaction and the rate of backward reaction is equal. Okay, so when the rate of forward reaction, it equals the rate of backward reaction. So यहाँ पे what we say is that is a dynamic equilibrium. Just speed se na, the reaction is moving forward and the reaction is moving backward. The amount of water vapors forming every second and the amount of water vapors condensing back at every second. अगर वो दोनों की speed constant है, I'm just sending you the board link. So that is, once again, let me.
So I've sent the board link. I just remember what is a dynamic equilibrium. That is, if every second you've got 100 molecules evaporate, the forward reaction 100 molecules are evaporating, and every second 100 molecules condense back. So the net quantity of water vapor remains constant. I mean, you can think of it this way: every second, let's say every second, there are let's say 5 molecules of water vapors are formed, and every second, 5 of them they lose energy and they condense back again. So they are condensing back again. So that means isko zara lock kar le. So 5 condense back again. So what happens to the net quantity of water vapor? That remains exactly the same. It doesn't change. Is this point clear? Is this clear? Agle second, you'll have 5 water molecules evaporating again, and 5 water molecules, some other 5 water molecules might be condensing back again. So the amount of water vapors remains exactly the same. Is this clear? Yes, sir. So Zainab, is this clear? Amna, is this clear? Say yeah. Clear? Yes or no? Yes, sir. Achha, so that is what a dynamic equilibrium is. I said, remember, not all reactions are reversible. There are very few reactions. I mean, we've got lots of reactions that are reversible, but not all. But it's kind of really hard to go back from products to reactants. Like if I burn a piece of wood, it's very hard to make that wood again. Those. इसी तरह अगर आप let's say you do a chemical reaction, let's say you cook something in your home, तो वापस let's say you take a vegetable and you cook it, तो उसको वापस reverse करना, that's kind of difficult. So not all reactions are reversible. ये एक reaction example है. That's an example of a reversible reaction. Now when you have a dynamic equilibrium, that's and this is what a dynamic equilibrium is. Once dynamic equilibrium is reached, the quantities of the reactants and products would stop changing. So at equilibrium, the concentration of your reactants and products would become constant. I say it's going to become constant. So, which I just showed you, they're not going to change at equilibrium. Agar equilibrium pe nahi hai, let's say every second, let's assume that every second 10 molecules are evaporating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. But only 3 are condensing back. इनमें से 3 जो है वो condense कर गए. फिर अगले second 10 more molecules evaporate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और reverse reaction slow है. Only 3 of them condense back. तो एक condense कर गया, दूसरा condense कर गया, तीसरा condense कर गया. ठीक है, so here's another one condensing back. अच्छा, that's not an equilibrium. उसके अंदर ना होगा कि एक चीज ज्यादा होती रहेगी. अगर एक reaction जो है वो ज्यादा fast हो रहा है, ठीक है, let's say evaporation is faster, तो steam के जो molecules होंगे they would increase in amount. Vice versa, अगर दूसरा reaction fast है, तो वो फिर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा. But that would mean कि it's not at equilibrium. Equilibrium पे दोनों की quantity exactly same रहेगी. अच्छा, now once you have an equilibrium and the rate of forward reaction and the rate of backward reaction is equal, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं. इनको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं. Equilibriums are going to be affected if you increase temperature, decrease temperature, increase pressure, decrease pressure. ठीक है, they're going to be affected. So starting with the first one,
whenever you increase temperature of a system, so what's going to happen to the equilibrium? First scenario, okay, let's say the reaction is at equilibrium. ये वो पानी वाली reaction है. You have water in liquid state and you have water in vapor state. Molecules are evaporating, but at the same time they're condensing at the same rate. अब कोई मुझे explain करे कि if I increase temperature, वैसे बता दो, you know this, कौन सा reaction favor होगा, evaporation or condensation? Which one is going to be favored? Evaporation. ठीक है, तो evaporation ज्यादा हो जाएगी. Higher temperature, ठीक है, तो इसका मतलब है there's going to be more evaporation. So it's pretty obvious कि evaporation का rate जो है वो, इसको अगर धूप पे रख दो या higher temperatures पे नीचे आग लगा दो, तो the amount of evaporation would increase. तो इसका एक rule है कि whenever you increase temperature, always the endothermic reaction is favored. And endothermic is the one that needs energy. That is, Hamza, it is already a dynamic equilibrium and all of a sudden I started increasing the temperature. The equilibrium disturb होगा क्योंकि evaporation would become faster. Hamza, is this clear? Was that clear? Yes, sir. Yes, sir. So now it's not going to be at equilibrium because one of the reactions would be faster compared to the other one. तो याद रखना कि जब भी आप increase करोगे ना temperature, it's always the endothermic reaction which is going to be favored. The one that needs energy. Evaporation needs energy. अच्छा, vice versa. इसको उल्टा क्या होगा? कि I decrease temperature. इसको जाके ना मैंने फ्रिज में रख दिया. तो अब मुझे तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा कि Condensation. ठीक है, तो there's going to be more condensation. मतलब evaporation slow हो जाएगी lower temperature पे, ठीक है? तो what's going to happen is कि अगर टेम्परेचर लो करते रहोगे ना तो evaporation तो मुश्किल होती जाएगी. यानी evaporation की जो स्पीड होगी ना वो तो कम हो जाएगी. So I can, what I can do is I can एक एरो कम कर देते हैं और vice versa condensation की जो स्पीड है ना वो ज्यादा होती जाएगी. तो amount of water vapors क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे क्योंकि वो वापस कंडेंस किए जा रहे हैं, राइट? उसके अंदर था कि वाटर वेपर्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो रही थी हायर टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन तेज हुई हुई है. तो इसका रूल ये कि whenever you decrease temperature, it's always the endothermic reaction that is favored. Exothermic, sorry. That releases energy. मतलब उनमें से ना एक रिएक्शन जो है ना वो ज्यादा तेज हो जाएगा रिलेटिव टर्म्स में, ठीक है? Are these 2 points clear? Yes, sir. ठीक है, इसको जरा चलिए. So that's the first rule. When you increase temperature, what happens? When you decrease temperature, what happens? ठीक है, increase temperature, it's always endothermic. ठीक है, उसको हम highlight कर लेते हैं. It's always going to be the endothermic reaction. Decrease temperature, it's always going to be the exothermic reaction. तो यहाँ पे तो clear है कि ये पानी के केस में तो बहुत obvious है कि endothermic evaporation speed up कर जाएगी. Either exothermic, you decrease temperature, exothermic would speed up. The same rule can be extended to all other reactions. For example, if I have any reaction that has endothermic and exothermic parts, the examples ये
Let's say I have N2 plus 3H2. There's a reaction, and this reaction is at equilibrium, and it's forming 2NH3, which is also gas. अच्छा, इसकी ना enthalpy change given होती है delta H, which is in this case negative 88 kilojoules per mole. अच्छा, negative sign का मतलब है whenever you see a negative sign, that means the reaction is exothermic. The enthalpy change, ये जो net energy change है, that's always given for the forward reaction. तो इसका मतलब है कि the forward one is the one that's exothermic. ठीक है, ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड वाला जो है ना, दैट्स एक्सोथर्मिक. द रिवर्स वुड बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट. इट्स गोइंग टू बी एंडोथर्मिक. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर. तो हमेशा याद रखना कि आइडेंटिफाई किसका करना है कि फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, क्या है. ठीक है, इट्स गोइंग टू वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन. द एंथैल्पी चेंज वुड बी गिवन and you have to look at it and you have to figure that out by looking at it. If it's minus 88, that means it's negative. That means the forward is exothermic. तो मुझे बताओ कौन सा reaction favor होगा if I decrease temperature? Which reaction would be favored? ऊपर क्या रूल बनाया था? सर ऊपर वाला एंडोथर्मिक हो जाएगा, नीचे वाला एक्सोथर्मिक हो जाएगा. नहीं, पहले बताओ कि डिक्रीज करोगे टेम्परेचर, कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, एक्सोथर्मिक ये वाला है, राइट? जी. तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन ज्यादा तेज हो जाएगा, फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगा. ओके सर. रिमेंबर, ये एंथैल्पी चेंज कभी चेंज नहीं होती. अगर फॉरवर्ड की एक्सोथर्मिक है तो बस वो सारी जिंदगी अब एक्सोथर्मिक ही रहेगी. उल्टा जो होगा ना, सर सबके साथ यही होगा कि अगर वो एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक ऊपर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए. हाँ, मतलब वो पहले डिसाइड करना है. और रूल ये कि सर डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो ऑलवेज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हिच इन दिस केस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, is going to be favored. ये बाकियों को क्लियर है? Saneem, is this clear? Zainab, Amna? जी सर. So there's going to be more forward reaction. Let's do another example like this. We've got I've got another reaction. Let's say this one. हाँ हमजा, फॉर एवरी इक्वेशन वो दी एंडो एक्सो जो है ना वो डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, एवरी टाइम कि which one is endo, which one is exo. For example, here's another reaction 2SO2 plus O2. It's an equilibrium with 2SO3. And the enthalpy change given is ये मैं अपनी तरफ से values बना रहा हूँ. It's minus 28 kilojoules per mole. अब मुझे ये बताओ कि which one is the exo, forward or backward? Remember, enthalpy change is for forward. Sign क्या आ रहा है इसका? Negative. तो इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब है the forward one is the exothermic reaction and the backward one is the opposite, which is going to be the endothermic. So remember, every time you have to, by looking at this, you will have to figure this out. Okay, which one is exo, which one is endo. और if I decrease temperature, बल्कि increase करते हैं temperature इस दफा, कौन सा reaction favor होता है increase करते हो temperature? एंडोथर्मिक. Which is this one. तो इसका मतलब है backward जाना शुरू हो जाएगा. तो endothermic, which अच्छा endothermic, which in this case is the backward reaction. That's going to be favored. एक और कर लेते हैं example. Let's say we have
So let's say we have NH3 liquid in equilibrium with NH3 gas. And they're saying that you're increasing temperature. So which reaction would be favored? पहले तो बताओ कि can you guess which one is exo, which one is endo? Liquid to gas, is it exo or endo? Liquid to gas, do they gain energy or lose energy? Lose energy. नहीं, गैस के पार्टिकल ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं या लिक्विड के पार्टिकल? ठीक है, Liquid के. नहीं, लेस एनर्जेटिक होते हैं ना. Liquid is जी. has less energy and gas has more energy. तो अगर आप liquid to gas जा रहे हो तो that is endo, you're gaining energy, ठीक है? And the reverse is going to be exo. ठीक है, तो आप और तरीकों से भी figure out कर सकते हो. A lot of times enthalpy change is not given. But in this case, just let me know okay, if you increase temperature, which one of them would be favored? Higher temperature, endo or exo? Endothermic. जो कि इस particular case में it's the forward reaction. ठीक है, so is this clear? The rule is simple. That's the rule. Whenever you increase temperature, endothermic would be favored, but every time you would have to figure out which one is the endothermic, forward or backward, okay? And whenever you decrease temperature, it's going to be the exothermic that's going to be favored, but you have to figure out which one is the exothermic, okay? So is this? अच्छा, अब इसके बाद ये कि अच्छा, इसके बाद जो चीज डिस्कस करनी है वो ये कि अगले पे चले जाते हैं कि which is the next thing, changes in pressure. What's going to happen if you start changing the pressure of different things? Okay, so let's say changes in pressure. And remember, only gases are affected. So pressure changes has no effect on the solid or liquids because they're incompressible. Only gases are affected as they are compressible. There's going to be no effect on solids or liquids. Okay, absolutely no effect on solids and liquids. So changes in pressure. तो यही water वाला example कर लेते हैं, ठीक है? The only difference is that this time what I'm going to do is कि I'll have a piston on top, a movable piston, ठीक है? So let's say this is my, अच्छा ये एक ना movable piston है at the top, और इसको ना वो भी कर लेते हैं. अच्छा, so ये इसको कलर कर लिया. अच्छा, I've got a movable piston which can be moved up and down, ठीक है? तो इसका मतलब है I can increase or decrease pressure by moving it. नीचे की तरफ करूंगा तो pressure increase होगा, ठीक है? So is this clear कि I can change the ये सेट क्यों नहीं हो रहा? चलो, अच्छा, I can change the pressure. और बीच में ना I have the liquid, और let's say ये high pressures पे पड़ा हुआ है.
तो मैंने इसको ना पुश करके नीचे की तरफ ले आया हूं, ठीक है। लॉट्स ऑफ प्रेशर हैज बीन अप्लाइड, अ लॉट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो देयर इज H2O gas vapors in equilibrium with H2O liquid vapors, ठीक है। वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड evaporation is happening and changes into gas as well. यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, Yes, sir. तो इंक्रीज प्रेशर का क्या मतलब है? कंप्रेसिंग इट, volume decreases when you compress things. अच्छा, so the point is कि गैस ज्यादा बनी है कम बनी है? कम बनी है ना, क्योंकि जगह ही कम हो गई है। तो less gas is formed. अच्छा, vice versa if I decrease pressure का क्या मतलब है? I'm going to move the piston upwards. That is what decreasing the pressure is. कि piston को ना ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दो, तब इसका मतलब है कि I'm decreasing the pressure, right? So whenever I decrease pressure, so what's happening is I'm decompressing it, या उसको सिंपल कर लो कि I'm expanding it. That would result in expansion and the volume increases. ये भी क्लियर है कि प्रेशर कम करने का मतलब क्या है? कि ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा था, वो अब मैं नहीं लगा रहा, इट्स आई एम लेटिंग इट गो फ्रीली, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तब मुझे बताओ कि गैस कितनी बनेगी, ज्यादा बनेगी कम बनेगी? क्योंकि अब जगह एकदम से ज्यादा होगी, यू गॉट अ लॉट मोर स्पेस। तो द अमाउंट, ज़्यादा बनेगी। अच्छा, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज, क्योंकि अब जगह ज्यादा है, ठीक है। तो मोर गैस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि जगह ही बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है बिना, so more gas is going to be formed in this way. तो कंप्रेस करोगे तो जगह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। लाइक इफ आई स्टार्ट कंप्रेसिंग दिस, तो गैस भी कम बनेगी, क्योंकि अगर मैं कंप्रेस ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूं एंड स्टार्ट कंप्रेसिंग दिस, इसको नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो ऑल ऑफ अ सडन गैस जो है ना, गैस के पार्टिकल्स दे विल गेट स्क्वीज्ड टुगेदर, इंसानों को इकट्ठा करके ना नीचे की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, दे गोइंग टू गेट स्क्वीज्ड, क्योंकि एकदम से जगह ठीक है, एकदम से मैं प्रेशर बढ़ाई जा रहा हूं, तो वॉल्यूम कम हुए जा रहा है। तो गैस पार्टिकल्स करीब आएंगे तो दे ऑल, क्योंकि जगह ही कम है, तो वो सारे बारी बारी करके दे टर्न इनटू लिक्विड स्टेट, क्योंकि देयर इज नॉट इनफ रूम फॉर गैस पार्टिकल्स टू फॉर्म, बल्कि मजीद गैस फॉर्म होना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो लेस गैस इज फॉर्म्ड और डिक्रीज प्रेशर मोर गैस इज फॉर्म्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तो इसके लिए आप लिखते हैं कि वो साइड फेवर होती है which has less gas mole side, मतलब वो रिएक्शन फेवर होता है जहां पे गैस के मोल्स कम है। रिमेंबर, गैस के मोल्स मैटर कर रहे हैं, दूसरे मोल्स मैटर नहीं कर रहे। और दूसरी साइड पे ना मोर गैस मोल साइड इज, मतलब एग्जांपल ये कि लेस गैस मोल्स और मोर गैस मोल्स, कि अगर मेरे पास वाटर है लिक्विड, ये ऊपर ये रिएक्शन चल रहा है ना, वाटर लिक्विड और वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, गैस के मोल्स बताओ इधर कितने हैं? 0 मोल्स।
यहाँ पे जीरो क्यों है? क्योंकि गैस ही नहीं है, देयर इज नो गैस। ठीक है, सिर्फ लिक्विड वाटर है। उस साइड पे कितने मोल्स है गैस के? 1 मोल है। तो विच वन इज द मोर गैस मोल साइड? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो मोर गैस बनेगी, बैकवर्ड जाता है तो बैकवर्ड में तो गैस मोल्स है ही नहीं, तो लेस गैस बनेगी। तो क्या है, मैं अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा, इफ आई इंक्रीज प्रेशर, कौन सी साइड फेवर होगी? लेस गैस। यानी रिएक्शन किस साइड पे जाएगा? बैकवर्ड। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, वाइस वर्सा, इफ आई डिक्रीज प्रेशर तो ज्यादा गैस बनेगी। तो मोर गैस मोल साइड कौन सी है? फॉरवर्ड है, क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा तो ज्यादा गैस बनेगी, 1 मोल गैस बनेगा। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? आमना, इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, और एग्जांपल कर लेते हैं। यू हैव गॉट N2 plus 3H2 and it's turning into 2NH3. All of them are gases. तो पहला तो इशू है कि किस साइड पे कितने मोल्स ऑफ गैस हैं। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाता है तो you've got 4 moles of gas. अगर यही रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो only 2 moles of gas are formed. So if the reaction goes forward, less gas would be produced. Just 2 molecules, 2 moles. If the reaction goes backward, more gas molecules are formed. 4 moles of gas, yeah, more gas is formed. तो अब ये जो करना है कि if I increase pressure, मैंने तो किस साइड पे रूल किया इंक्रीज प्रेशर? लेस गैस और मोर गैस? और इंक्रीज प्रेशर से दिमाग में क्या आना चाहिए? यू आर कंप्रेसिंग इट, उस पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो यू आर स्क्वीजिंग इट। ठीक है, तो ज्यादा गैस बनेगी, मोर गैस बनेगी, लेस गैस? लेस गैस। ठीक है, लेस गैस। रिमेंबर, इंक्रीज प्रेशर से ना दिमाग में आना चाहिए, यू आर कंप्रेसिंग इट, तो जगह खत्म होती जा रही है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गैस फॉर्म नाउ, सो less gas would be formed, which in this case is what side? Forward. ठीक है, more forward reaction is going to take place. Vice versa, अगर मैं डिक्रीज करता ना प्रेशर तो more gas बनती, तो backward जाता, more gas would be formed in the backward reaction. So is this clear? Yes sir. यस सर। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लो कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि I've got अच्छा 2H2 gas plus O2 also gas, and it's in equilibrium with water which is also in gaseous state. बताओ जल्दी से, इंक्रीज करोगे प्रेशर किस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन दिस केस? मोर गैस और लेस गैस? क्या रूल है, इंक्रीज प्रेशर करोगे तो क्या होगा? There's less gas. ठीक है, there's going to be less gas. आप स्क्वीज करो, less gas would be formed. ठीक है, जगह खत्म हो जाएगी, less gas moles side is favored. Which is which side? इधर कितने moles of gas है? 3. और प्रोडक्ट में कितने moles of gas हैं? तो less gas mole side is favored, which is the forward in this case. So forward reaction would speed up. Because you're increasing pressure. If you're increasing pressure, you're compressing it. You're pushing the piston down, you're increasing pressure. So less gas is going to be formed. Less gas is in the forward reaction. इस केस में, ठीक है? Is this clear? यस
नहीं हमजा इसमें एंडो और एक्सो नहीं मैटर करता, ठीक है? रिमेंबर वो एंडो और एक्सो टेम्परेचर के साथ मैटर करता है. When you're dealing with pressures, the only thing that matters are these 2 points. You increase pressure, less gas side is going to be favored. You decrease pressure, you expand, more gas will be formed. Hamza, is this clear? इसका एंडो और एक्सो से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? Okay, sir. So ठीक है, let's continue with this tomorrow now, ठीक है? Okay, everyone. Allah Hafiz, sir. Okay, Allah Hafiz.